Hello everyone, welcome to Catway. So in our previous videos, we have discussed about what all colleges you can target within the range of 80 to 90 percentile, 90 to 99.9 percentile. Now we have come up with a very fresh video on how to prepare for JAT examination. JAT, why should we focus too much on JAT? Just because if your CAT didn't go as per your predictions or as per you have desired in the previous 4 or 5 months, so abhi JAT ke through there are many good colleges that you can target. Obviously, there are another examinations too, like SNAP is there and MAT is there, along with that IIFT is there. But number of colleges that you can target from JAT is way more in comparison to all these examinations. So what are the list of good colleges in this? You can target, first of all, you can target obviously XLRI Jamshedpur. Along with that, XIMB Bhubaneswar is there, XIM Bhubaneswar is there. Third college is IMT Ghaziabad, IMI New Delhi, and many more colleges जो JAT scores को prefer करते हैं. So in with that respect, we will be discussing about कि इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि what should be the strategy of yours for the next 30 days to tackle JAT examination. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत नया सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का, which we are not at all aware about इतने दिनों में. I am talking about the freshers who have not come towards the decision making yet. Along with that, the verbal एबिलिटी का भी पैटर्न यहाँ थोड़ा सा अलग होता है. क्वांट के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इन कंपैरिजन टू कैट ज्यादा होती है. सो वील हैव टू सी कि इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू like this video. Okay, so the first part that I want to discuss about here is that first of all we have to know what is the pattern of JAT examination. So in JAT you will be getting two sections, right? First section comprises of verbal ability, logical reasoning, verbal ability, right, decision making, and quantitative aptitude is there, right? So in verbal ability, you are getting around 26 questions, right? All the questions are of 1 marks each. Similarly, in decision making, you are getting around 21 questions and all questions are of 1 marks each. And the weightage of quantitative aptitude is the maximum and you are getting around 28 questions here, और सब 1 marks का होता है, right? सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज ऑफ 0.25 मार्क्स ईच इफ यू अटेम्प्ट इट रॉन्गली. और 6 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा छोड़ने पे आपके कुछ और मार्क्स भी कटते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है. The second part is about general knowledge. General knowledge के सेक्शन में there are 25 questions, but the good thing in general knowledge is there are 25 questions in general knowledge. But the good thing with general knowledge is कि इसके आंसर्स जो है the percentile that you are getting, ये eliminatory round के लिए नहीं होता है. These are just for the sake of giving you the marks for GK. इससे आपके eliminations नहीं होते हैं. Eliminations आपके बस ये 75 questions पे हो, right? So moving on to the next slide, we will see कि XLRI जमशेदपुर का कट ऑफ क्या रहता है. So if we will be talking about XLRI Jamshedpur ka cutoff, so overall cutoff, as you can see it from here, the overall cutoff for XLRI Jamshedpur for male is 93 percentile, whereas for female is 90 percentile. If we will be talking about verbal ability ka cutoff, so it should be 75 for male candidates. Obviously, I am talking about the BM course and I am talking about the general candidates. General candidates, right? So obviously आपके VA और वर्बल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग में आपके 75 परसेंटाइल होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, वेयर आज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 72 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड. Similarly, in decision making, you at least need to acquire around 72 percentile, and female candidates should also acquire around 72 percentile. अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 80 परसेंटाइल, वेयर आज फीमेल कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर अराउंड 75 परसेंटाइल. तो ये तो हो गई हमारी परसेंटाइल की बात, राइट? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट की बीएम में 93 परसेंटाइल पे कॉल्स आती हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वेदर वी विल बी एबल टू कन्वर्ट इट और नॉट. Frankly speaking, 93 percentile पे if you don't have any stellar resume with in your hand, तो difficult होता है, मुश्किल होता है convert करना. But if you are in the range of 96 plus or 97 plus,
you have a decent chance to convert this examination through your GDPI process. And fun fact is that even 99.9 वाले candidates का भी GDPI के through नहीं होता है. If they have succumbed in their PIs, I have seen a lot many students in the last 1 or 2 years where people have scored more than 99.5 percentile, still they were not able to convert the BM program at XLRI. Just because in GDPI process they see for each and every acuteness of the student. अगर हम लोग उसी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की HRM कोर्स की बात करें, which is considered one of the best course in Asia in HRM, XLRI जमशेदपुर का. तो if we will be discussing about XLRI, तो यहाँ पे दो इसमें segregate होती है चीजें. The first thing is that there are male candidates there, and in male there are two categories, that is of engineering and that is of non-engineering. So in engineering, if you are scoring 80 percentile, for both engineers and non-engineers, 80 percentile is required to get a call for HRM, right? In VALR. Along with that, in decision making, both of them needs to acquire at least 70 percentile, whereas in quantitative aptitude and data interpretation, again 70 percentile is required. अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो 92 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है HRM से कॉल्स आने के लिए मेल कैंडिडेट्स को, वेयर एज फॉर नॉन इंजीनियरिंग मेल कैंडिडेट्स इट इज अराउंड 90 परसेंटाइल. अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ओवरऑल दे जस्ट रिक्वायर 90 परसेंटाइल टू गेट अ कॉल फ्रॉम HRM, एंड फॉर नॉन इंजीनियरिंग फीमेल कैंडिडेट्स 87 प्लस परसेंटाइल हैव गिवन देम द कॉल्स लास्ट ईयर. These are the data based on last year projections that we have gathered. So moving on to the next thing, now we have talked about everything. Cutoff क्या रहती है, किस फीमेल कैंडिडेट्स को एडवांटेजेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ द बिगेस्ट थिंग इज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेट. सबसे पहले आपके हाथ में बस 30 दिन है. In these 30 days you have to make a timetable, you have to make a plan for yourself, and you have to act accordingly. So basic thing is that prepare the timetable. That's the most important thing. उसके साथ साथ आपने क्वांट के लिए अपने नोट्स बना रखे होंगे, कैट के रिवाइज दोस नोट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, जस्ट बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वांट इन कैट जैट विल बी अ बिट हायर इन कंपैरिजन टू कैट. बट अगर आप उन्हीं बेसिक चीजों को कन्वेंशनल वे में करते आए हैं तो इट वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. Revise the concepts in quant, revise your mocks that you have already given. Along with that, take daily mocks, or at least on an alternate basis, take the mocks regularly. At least you should give 10 to 15 mocks in these 30 days. Obviously, I know aapke on 10th or 17th there will be snap, then there will be IFT on 18th. So it will be difficult to focus on JAT abhi se, but still you have to focus on this. You have to make the daily mocks. You have to give the mocks on a daily basis or on an alternate basis, depending on the availability of time with you. And along with that, do solve the JAT previous year papers. It will be very, very essential for you if you are solving JAT previous year papers. It will give you a knack कि questions कैसे पूछे जाते हैं JAT में. अगर हम लोग जैट के सारे सेक्शंस की बात करें सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, तो अगर वर्बल एंड इसकी बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, तो आपको VARC के लिए और LR के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 to 6 RCs पर डे टारगेट करना है. और यहाँ पे RCs आपके थोड़े से अनकन्वेंशनल आते हैं इन कंपैरिजन टू कैट. व्हेन आई वाज राइटिंग जैट इनटू 2019 also, I guess there was a poem that had come there. इन जैट अभी तक मैंने पोएम फेस नहीं करा था, बट यहाँ पे आपको पोएम्स भी पूछे जाते हैं. अनकन्वेंशनल पेपर यू माइट गेट. वोकैबुलरी पे यहाँ पे फोकस रहता है, जैट का फोकस वोकैबुलरी पे भी होता है. सो दैट्स व्हाई यू शुड आल्सो फोकस ऑन इनहांसिंग योर वोकैबुलरी. एटलीस्ट 10 वोकैब्स ऑन अ डेली बेसिस. अगर आप देखोगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके आप अगर सर्च करके देखोगे तो स्टिल यू विल बी एबल टू गैदर अराउंड 300 वोकैबुलरी, और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के यू कैन रिमेंबर गुड नंबर ऑफ वोकैब, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन जैट. Along with this, जो मैंने अभी बात करी, analyze all your mocks that you are giving. So in VARC and logical reasoning, अब mock लेना regularly, taking mocks and उसकी frequent analysis will be the key for you to succeed. And VARC का section important होता है guys.
VARC का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट टू गुड इन क्वांट्स, क्योंकि यहाँ क्वांट्स रिलेटिवली टफ आता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अगर हम लोग साइमल्टेनियसली क्वांट्स की बात करें तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स दैट आर फेवर्ड इन जैट, जो रेगुलर पैटर्न्स में हम देखते हैं। दैट इज ज्योमेट्री इज फेवर्ड इन जैट, percentage profit and loss is favored in JAT, time speed and distance is favored in JAT, और इसके साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरिएशन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दीज 4 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रैक JAT. Not cracking JAT, enhancing your marks in quantitative aptitude in JAT, if you want to enhance your marks, these 4 areas are very important for you. यहाँ पे भी मंत्रा बस वही है, analyze all the mocks, analyze all your notes that you have made, analyze all your notes, and you will be good to go. Along with that, there are a few things for data interpretation, that is you have to see line graphs, pie charts, tabular graphs, etc, etc, and you have to practice all these. You can, जो भी mock subscriptions आपने ली है, just go and search for all these topics, practice frequently on these topics, enhance your scores, अपनी गलतियों को ढूंढो, work on those things, it will be good. And along with that, if you want to tackle decision making, that's a key tie breaking section in this. अगर decision making की बात करें तो you have to see for those case studies जहाँ पे की management issues आती हैं, those case sets जिसमें कि आपके बहुत सारी चीजें होती है, like data arrangement sets are there, ethical dilemma के situations होंगी, all those things you have to focus on those to score good. अब इसके लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है आपका JAT प्रीवियस ईयर पेपर्स। किसी के भी मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है JAT प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, उनकी सॉल्यूशंस को देखिए, वीडियोस देखिए, हाउ टू इंप्रूव इन ऑल दीज थिंग्स। along with that, focus on mocks, focus on improving the scores in mocks. अगर आपका JAT DI सेक्शन स्ट्रॉन्गर है या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्गर है या VALR स्ट्रॉन्गर है, तो the basic thing that I say to all my students is कि if you are good at something, make it the best, and if you are weak at something, make it good, so that you can at least succeed in the examination. So follow these patterns and you will be good to crack CAT. All the best. Follow us for more videos. Till then, bye bye, CIO from CAT. Bye guys.